Assalamualaikum guys. Welcome back to our YouTube channel ChulBull Reactions. So guys, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। उसका टाइटल है 10 बिगेस्ट लाइज अबाउट पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के बारे में रॉन्ग रिपोर्ट्स, फेक मीडिया और जो प्रोपेगेंडा अराउंड द वर्ल्ड होता है, तो उसके बारे में एक फैक्ट्स हैं कि जो ऐसे 10 बड़े बड़े झूठ जो पाकिस्तान के बारे में बोले जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो क्या है। गाइस, जैसे कि हर कंट्री के अंदर डिफरेंट मीडिया वगैरह होता है, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए झूठ बोला होता है। जैसे कि वो जैसे कहते हैं ना, कैमरे में जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। इस तरह हर कंट्रीज के होते हैं ऐसे कि उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि ये इस तरह से भी है, इस तरह से भी है। इसी तरह पाकिस्तान, ये वीडियो है बेसिकली पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे 10 झूठ हैं जो कि ऐसा है नहीं है, हकीकतन ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसा है। फेक रिपोर्टिंग की जाती है ना बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के एनिमीज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो वो फेक रिपोर्टिंग करते हैं और उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो 10 ऐसे बिगेस्ट लाइज हैं पाकिस्तान के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम देखते हैं। हमने देखी नहीं है सच ये वीडियो, लेकिन इसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बी विद अस। There's a lot of things that people say and think about Pakistan that may not even necessarily be true, and some of the stuff is just straight up lies. Welcome to another episode of FTD Facts. My name is Leroy Kenton, and in this episode I'm showing you 10 of the biggest misconceptions, stereotypes, and just straight up lies about the country of Pakistan. So starting off at number 10, it's very dangerous. Emphasis on the word very. Yes, of course, there are some parts that definitely you may want to avoid, especially if you're going by yourself. But in general, Pakistan is completely fine. Of course, it's seen bad years over the past decades, but the last few years especially has seen a lot of increase in safety. The government, of course, is doing what it can to make everybody feel welcome in their country. Also remember that it's the 36th largest country in the entire world, as well as the 6th most populous country. So when you look at the proportion of things, there's no more of an increase of crime or safety hazards when you compare it to a country that has a lot smaller population. Now the next thing is, all women wear burqas? Okay. That is not true at all. Completely false. Like all societies, Pakistan is divided into those who are more conservative, while others are more liberal. And of course, female dressing is that same way as well. So based on where you're going, you're gonna see women wear all sorts of different stuff. So like the street fashion is completely diverse, and it differs based on whether you're in a rural area or in an urban area. Lie number 8. Pakistanis are uneducated and illiterate. Alright guys, so let me break this down for you. There are 163,000 primary schools in Pakistan. There's 1,267 colleges and 174 universities. Pakistan has the 7th largest pool of engineers and doctors in the world. And to mention one, Muhammad Abdus Salam was a Pakistani theoretical physicist. He was a major figure in the 20th century in the field of theoretical physics, and he shared the Nobel Peace Prize in 1979 in physics with Sheldon Glashow, as well as Steven Weinberg for his contributions to the electroweak unification. Now I can go on about the different facts that I found, but I actually have an entire video just about surprising discoveries and inventions from Pakistanis, so you definitely want to check it out. I do have a link to that video below. Trust me, it'll like change your whole perspective, so just go watch that. And I'm going on to the next slide. And number 7, the whole country is underdeveloped. So Pakistani cities are not exactly like what you see on the TV shows. A lot of shows just show like the real bad stuff. But in reality, a lot of places in Pakistan are very clean, and vegetation is in abundance in the country. People in Pakistan speak Arabic or Pakistanian. Alright, a lot of Pakistanis know basic Arabic because they recite the Quran, which is the holy book of Islam. And of course, Pakistan is a Muslim majority country. So to understand it clearly, you definitely gotta learn some Arabic. Now the term Pakistani isn't a language. It's used by people who have no idea that Urdu
Urdu is the official language of Pakistan. I think Urdu and English as well. Now, the country also has several regional languages, including Punjabi, Pashto, Sindhi, Balochi, Gujari, Kashmiri, as well as several others. Men are running around wearing turbans in Pakistan. You look at men in Pakistan, right? They're pretty much wearing what we wear over in North America. You know, you'll see people in t-shirts, jeans, jackets, all sorts. And yeah, some of that Pakistani fashion, like, I'm feeling it. I really am. Now, one thing to point out, guys, Pakistan is not in the Middle East. It's not. Like, it's not. It's located in South Asia. And you know, some people believe that camels and donkeys are a form of transportation over in Pakistan. Okay, that's not completely false, because yeah, you may find some people in rural areas riding on a camel or a donkey, but Pakistan is a modern country with modern means of transportation. You look at cities like Lahore, Islamabad, Rawalpindi, they all have a metro bus service, as well as Lahore has an Orange Line train, which is under construction, I believe. And yeah, some of these public transit services are still under construction, but either way, they have a very organized motorway system, and they're still working on it and improving on it, because you know, there's a lot of people in that country, so there's a lot to manage. Of course, you're gonna get some traffic and all of that, but most people don't ride around on donkeys and camels. Now, here's a big one. People believe that child marriages is a common thing in Pakistan. Pakistani children, they go to school like every other child, and that's like pretty much it. And finally, the biggest misconception, stereotype, and lie about Pakistan is that they are completely anti-India. According to many people, they feel that Pakistan, like on a whole, has like this huge hate for India. So ever since the time of independence, a lot of people, yes, have fostered that hatred, but has the relationship improved? Well, yes, of course, over the years, it has. This might be because people are just, you know, completely tired of fighting. And of course, there's always that rivalry, but in cricket especially, India versus Pakistan, those are always like the best matches. But to say the country is completely anti-India is just not a fair statement at all. Are there Pakistanis that don't like India? Of course. Are there Indians that don't like Pakistanis? Of course. But is a country anti-Indian? No. Okay guys, so that's all I have for you in this episode. A little bit of a lighter tone than most of our other videos. So I hope you guys saw a totally different side of Pakistan. This was 10 of the biggest lies and misconceptions and stereotypes about the country. And let me know, what are some that you've heard? Let me know down below in the comment section, as well as comment on anything that you may want to talk about that I shared in this episode. I'd love to hear your thoughts about anything I mentioned as well. For all of you that are still here, I'm assuming that you enjoyed this video. Well, I have another one for you to check. So guys, this is the video जिसके ऊपर हमने रिएक्ट किया है. इसमें बताया गया कि 10 biggest lies about पाकिस्तान के बारे में क्या-क्या मिसकंसेप्शंस हैं, प्रोपेगेंडास हैं, फेक न्यूज़ पाकिस्तान के बारे में. तब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि हमसे हेट कर रहे होते हैं. उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह और ऐसी रिसर्च गूगल के ऊपर उन्होंने उनसे आता है उसको शाया किया होता है कि भाई पाकिस्तान के बारे में हमने ये लिख दिया और बहुत सारे ऐसे लोग जैसे जाहिर है जो कि अनएजुकेटेड पीपल है पाकिस्तान में, जैसे कि हमारी कंट्री है, मतलब उनको नहीं पता कि वो लोग हमारे पास सुनना आते हैं. बिल्कुल. तो बस वो जो न्यूज़ वगैरह पे रिपोर्ट्स गूगल वगैरह पे आता है. यूरोप की कंट्रीज तो एक्चुअली पाकिस्तान का फेस ना मूवीज में ज्यादा देखती हैं, तो मूवीज में एलैबोरेट इस तरीके से किया जाता है कि डंकीज पे, कैमल्स पे वो ट्रैवल करते हैं, सारी औरतें जो है बुर्का पहनती हैं और सारे जो मर्द हैं वो टर्बन पग पहन के बैठे होते हैं. पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान एक बड़ी ज्यादा मॉडर्न कंट्री है, जिसकी सिटीज जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, इधर भी फैशन वैसे ही होता है. बिल्कुल. और उसने ये भी कहा है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं उसके अंदर प्रॉपर एक फैशन की प्रॉपर एजुकेशन होती है. पाकिस्तान जो सा है जो क्लोथिंग में तो बहुत ज्यादा ऊपर भी है. फैशन डिजाइनिंग सिखाई जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे मिसकंसेप्शंस और प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं. और रिसेंट ईयर्स में एज अ टेररिज्म के लिहाज से कह सकते हो कि 2002 के बाद से या 2005 के बाद से 2015 तक टेररिज्म रहा है समहाउ पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में, जैसे वजीरिस्तान हो गया, बलूचिस्तान के कोयटा वाली साइड पे या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर एरियाज में टेररिज्म रहा है. लेकिन रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में एक बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान एक वेल ग्रूम्ड कंट्री जो है वो बन रहा है. और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो रोड्स हैं वो
इतने ज़्यादा वेल मेंटेन्ड एंड बिल्कुल। क्लीन किए गए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है, और जैसे कि इस चीज पे तो दाद देनी पड़ेगी इसको। डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट जैसे कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन, इनके ऊपर जो है उन्होंने वर्क किया है, और तो नज़र आता है कि काम किया गया है। जो हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल लेकिन जो जिस पार्टी ने अच्छा काम किया उसको हमें अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट चाहिए। करना और चाहिए। जैसे ये जो बंदा था जिसने प्रॉपर वीडियो में इसके अंदर लाया, यूरन इसको के टाइम में हम इसको प्रॉपर अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ये बंदा जो है लाया है कि भाई ये सब झूठ है, इसके ऊपर बिलीव ना करें, ट्रुथ लेके आए ना ट्रुथ वो लेके सारे आए। हम सब लोगों को, और उसके व्यूज भी और इसके काफी अंदर ज्यादा है। एक और भी बात ने बताई कि भाई जो चाइल्ड्स की मैरिज होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा समटाइम बिल्कुल नहीं रिमोट है। एरियाज में रिमोट भी होता एरिया है, ये भी नहीं, हम रिग्रेट भी नहीं करते या नहीं जो उसको ये सच नहीं है करते कि वही है, झूठ है, लेकिन बहुत माइनर सी रिमोट एरियाज में समटाइम जो कि होता भी है इस तरीके से। जाहिर बात है पाकिस्तान में सारा का सारा तो वेल ग्रूम नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज वगैरह पे है वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन का भी इतना नहीं है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान इलिटरेट नहीं है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कर रहा है, फोकस कर रहा है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो सी है टॉप रैंक पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। 2018 के बाद तो टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान इमरान खान ने, और ट्रीज लगाए, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था एक, तो पाकिस्तान एक जैसे उसने कहा पीसफुल था कंट्री कि है। दरियाल सॉरी क्या कहते हैं इसको, दरख्त लगाओ महम स्कीम जो सी थी उसने लगाई थी, और हर इवन के मैनेजर अहमद ने भी हमने जो है वो लगाया, Trees प्लांट लगाए। लगाए थे। बिल्कुल। तो क्योंकि जाहिर है हम अपने पाकिस्तान को ग्रीनरी करें, पोल्यूशन से बचाएं, तो मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस वेल तरह के और ग्रूम्ड भी हैं। फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले जाते हैं, तो प्रोपेगेंडा अराउंड द वर्ल्ड किया जाता है। सो गाइस आज का रिएक्शन ये था। हमने ये वाली वीडियो चीज की है और इसके ऊपर हमने रिएक्ट किया, और हमें खुद सुन के इवन हंसी भी आती बीच बिल्कुल। में कि यार ऐसा कैसे लोग ऐसा कैसे बोल हो सकते सकता हैं है। या सोच सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये थी वीडियो जिसके ऊपर हमने रिएक्ट किया है, तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो और हमारे शेयर पाकिस्तानी फेलोज हैं उनको भी समटाइम पता लगा होगा कि यार ये कैसे झूठ ये बोले कैसे जाते हैं। झूठ बोले गए हैं। और हमने इसको क्लियर करके हमने दिखाया है कि जो बाकी मुल्क वाले हैं वो कैसे सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो तो गाइस गाइस हमें हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यू आने वाले व्यूज जो हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे और चैनल हमें को। सजेस्ट करें कि अगर कोई और ऐसी इनके पास वीडियोस है हम इसके ऊपर रिएक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।